हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनते हो और अपना वीडियो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, right? So all the best, students. Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to read about a story which is Water in the Well. So let us go ahead and read this chapter. You can say story. What a farmer needs most for his field is a good source of water. So basically, the writer or the author firstly asks you or tell you that farmer basically need a good source of water, so that obviously why he needs a good source of water, that he can give it to his field, and from his field he has plenty of fruits, grains, etc., and he can fill his child or his family's stomach. So Qasim had his eye on a well that was just outside the boundary of his field. But Ahmed, the man who owned the well, was a crafty old man. He wouldn't allow anyone to draw water from his well. He told Qasim, "Why do you come to me again and again to beg for access to my well? I feel sorry to turn down
turn down your request every time. I have a suggestion for you. Collect some money and buy the whole well from me. Qasim thought over the suggestion and liked it. He knew Ahmed would ask for a lot of money, but he saw in his mind's eye channels of water running from the well through his field and made a decision. He took all his savings to Ahmed and bought the well. So Qasim, he was you can say he has an eye on a well that was in the field of Ahmed. He want, but he has an eye, because that well lie very close and near to the boundary of his field. So he just found that he should have that well so that he can access that water, and his field has plenty of fruit, or you can say plenty of rain. So Ahmed, he was a crafty man. Crafty means clever. So he's very clever man. Who, Ahmed? So he said to Qasim, or he told to Qasim, that why you always come and back to me to give you access to the well. I feel very sorry because I can't give you that access. But I have a suggestion for you. Collect some money from and just buy that well from me. Then Qasim, he thought it was a very good idea, but Ahmed would be asking for more money. But he thought in mind that it would be very good if he bought this, because there's a channel of water for his field. So he took all his saving and gave to Ahmed. The next day he went to the well happily and dug out a channel. But when he began to draw water, there was a surprise in store for him. Suddenly Ahmed came forward and announced, "What are you doing, Qasim? How dare you touch the water in my presence?" "What do you mean? Haven't you sold this well to me?" Ah, I sold the well all right, but not the water in the well. The water still belongs to me. You can't use it. If you needed the water along with the well, you should have said so. I have a suggestion for you. Pay for the water separately and use it. You can buy fresh water every day. I don't mind. So, what happened the next day? Since Qasim has bought that well, so next day he went to that well and he's digging a channel. He's digging a path so that water can go directly into his field. But as he was beginning to, as he's drawing the water from the channel, it was a surprise for him. Suddenly Ahmed came forward and said to Qasim, "Qasim, what are you doing? Why are you touching the water in the water?" So Qasim say, "You have sold me this well." So he say, "Who?" Ahmed say, "I sold the well, but not the water. The water still belongs to me. Collect some money and pay regularly the money for the water. You will be getting fresh water each and every day. I won't mind, because you are paying me. Why I will be minding?" Qasim was shocked. Qasim was shocked to hear Ahmed's argument. It was so unfair, so unjust. He rushed to the Qazi and told him the whole story. The Qazi was a wise man. He told Qasim to bring Ahmed to his court so that he could hear both sides of the case. So Qasim, he was very sad. He was shocked that Ahmed is saying these words. Why? So it was unfair. It was unjust. It was not fair. What it is? It was not in the favor of him. So what he do? He just moved very fastly. Rushed means he just moved very fastly to the Qazi, and Qazi tell all the story to the Qazi. Qazi, he was a wise man. You can say has some knowledge. You can say yes, he is.
one who will guide everyone on intelligent you can intellectual level. So he told everything to Qazi and then Qazi. So he told Qasim just bring Ahmad and he would be hearing both of his case. Ahmad was summoned to the court. Ahmad was summoned Miss Kaur to the court. And Qazi heard his argument patiently. So Qazi, he heard his all argument patiently, calmly. What he's saying, he listened very carefully. I see that you are right. What you have said, what you have sold is the well. The water is all yours, isn't that so? The Qazi said, I think you are right. You have sold only the well, not water. So Qasim's heart sank when he heard the Qazi's words. Qasim, Ahmad in his heart of hearts was overjoyed. He had never thought Qazi would side with him. So Qasim's heart sank. He feels so bad when he hears the words of Qazi. And Ahmad is overjoyed, very happy, as he had not thought that Qazi will be speaking or giving the view or giving the point in the favor of him. My lord, I am so grateful you understand the fine points of this case. The water does indeed belong to me. So Ahmad was so happy. He said, my lord, you are my lord. I'm very happy. I'm very grateful to you that you understand the points and just understand what belong to me. In that case, Ahmad, why are you keeping it in Qasim's will? You have no right to keep your belonging in his property. You must remove them immediately, or else you can pay a daily rent to Qasim. Then he will allow you to use his well. Ahmad was so confused that he did not know what to say. All the people present in the court began to laugh. So Qazi said, when he said that yes, you are right, the water is mine, he was so happy. Then Qazi said, in that case, Ahmad, you are placing your water, your thing in the Qasim's well. So in that case, you have to pay the money to Qasim, or you have to pay the rent. Daily rent, every day you have to pay the rent to Qasim. Then only he will allow your water to. Then only he will allow you to use his well, because the well is his, and you have kept your water. Everyone was laughing, and Ahmad was confused. But Qasim was a generous man. He never troubled Ahmad for the rent that was due from him. Qasim, he was a generous man, very good man. Generosity, he said generous. Yes, and he never troubled Ahmad for the rent that was due from him. Because he was also trying that water. So he had never troubled to give him money. So thank you class. You can read this thing. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो, राइट। 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो। ये है ट्यूशन आपका, ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो।
टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट, और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं। तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशंस बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है। आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट, सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए। और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, या नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉगिन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जा कर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।